Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें ब्राउनियन मोशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस विषय रे पढिबा देखो एई जो ब्राउनियन मोशन को 1827 माने आज को प्राय 200 वर्ष पूर्वे जड़े बोटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन देखिया को पाइथिले जेते बेले पोलन ग्रेन्स माने फूलर जो केसर रे थिबा पराग रेणु ताकू जदी हमें पानी रे रखुछु सस्पेंड करिकी ओके देन ताकू जदी हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप रे देखिबा it is showing irregular continuous dancing motion okay माने पराग रेणु गुडा याड याड पूरा randomly मूव करथुबे later on से कोन कले एई ऑब्जर्वेशन को एक्सटेंड कले पुनी towards the suspension of large number of inorganic substance like colloidal solution is examined under ultra microscope okay so as the direction of illumination is perpendicular to the axis of the microscope ro axis सहित perpendicular हेकी जदि हमें illumination light टा पकेबा ताले देखा गला जे suspended particles in the solution look like bright illuminated spots okay माने पूरा चकचक करी की bright spot बढ़िया देखा गला okay so these illuminated particles continuously move to and fro एपट सेपट माने मूव करचंती आ किछि भी समान को भितरे ऑर्डर नहीं ओके रैंडमली हापाजार्ड वे रे समान मूव करचंती ओके द पार्टिकल्स आर स्पिनिंग दे आर राइजिंग सिंकिंग एंड राइजिंग अगेन ओके केतरा पार्टिकल घुरुची केतरा पार्टिकल बुडी जाउची पुणी ऊपर को उठुची ओके सो द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज कंटीन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस ओके कंटीन्यूअसली मूव करची आ आपे आपे स्पॉन्टेनियसली ए जिनसटा होची so this non-stop random and haphazard motion is perpetual and spontaneous okay जेमती कहली एटा आपे आपे होची so this non-stop random and haphazard motion is called Brownian motion तांको नारे रॉबर्ट ब्राउन को नारे याकू Brownian motion बोली की कहा गला so as you can see in this figure एठी ये जो पोलन ग्रेन्स बा ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जोटा की गोटे कोलोइडल सॉल्यूशन सो एठी देखो एठी एरो मार्क होची डायरेक्शन ऑफ मोशन सो किछि भी एमान को भितरे ऑर्डर नाही तीनटा पार्टिकल को एठी बिगर साइज रे देखाई छी ओके जे कोनसी डायरेक्शन रे दे कैन मूव ओके अच्छा now let us see the essential features of this Brownian motion number 1 रे ये कहूची the motion of each particle is completely irregular and random okay जे कोनसी भी डायरेक्शन रे ई मोशन टा हे पारे एंड नो टू पार्टिकल्स आर फाउंड टू एग्जीक्यूट द सेम मोशन ओके दुईटा पार्टिकल रो समान मोशन हेबो नहीं सेकंड पॉइंट रे द मोशन इज कंटीन्यूअस एंड टेक्स प्लेस फॉर एवर थर्ड पॉइंट रे द स्मॉलर विल बी द पार्टिकल द मोर will be the motion okay এই জিনিসটা এটি থার্ড পয়েন্টে কইছি smaller particles appear to more agitated than the larger ones okay কাই কি সেমতি होची आकु देखिबा now fourth point रे the motion is independent of the nature of the suspended particles ताकर कोन नेचर अछि ता ऊपर किछि भी डिपेंड करे नाही and two particles of the same weight and size move equally fast at the same temperature okay समान weight समान size रो समान भाव रे एपट सेपट माने समान मोशन रे मूव करिवे समान टेम्परेचर रे ओके फिफ्थ पॉइंट द मोशन बिकम्स मोर विगरस जेतेबेले हमें टेम्परेचर को बढ़ाई दोछु आहुरी बेसी जोर रे समान मूव करिवे नाउ सिक्स्थ पॉइंट रे द मोशन इज मोर कॉन्स्पिकुअस माने
आहरी भल भाव विजिबल दृश्यमान हो जाए गोटे लिक्विड रे जदि आम लोअर विस्कोसिटी माने जार जो लिक्विड रो बहलता कम ओके से भाया लिक्विड नौ ताहले मोशनटा आहरी बेसी भल भाव विजिबल होता है। देन 7th पॉइंट द मोशन इज नॉट मॉडिफाइड ड्यू टू द शेकिंग ऑफ द कंटेनिंग वेसल जो वेसल रे सेटा को रखीच तमें ताकू जदि आम शेक करवा हलैबा ताहले मध्य मोशन उपरे सेटा किछि भी मॉडिफिकेशन आनिबो नाही। लेट अस नाउ सी द बेसिस ऑफ दिस ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन होची ड्यू टू bombardment of dispersed particles by the molecules of the medium which are themselves in a state of continuous haphazard motion। so जेतेबेले पार्टिकल जदि आम नौ सफिशिएंटली लार्ज साइज रो ताले एक्चुअली जो फोर्स रोची ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंपैक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली बैलेंस हो जाउची तेणुक ब्राउनियन मोशनटा लार्ज साइज पार्टिकल रे देखा जाए नहीं किंतु जितेबाला आम पार्टिकल साइज बहुत छोट नहीं जाऊँ वेरी स्मॉल साइज देन ईच पार्टिकल विल बी एक्टेड अपन बाय रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स ओके सो इट विल consequently move in a haphazard manner in response to the magnitude and direction of this force which is unbalanced one okay so in other words the particles move in response to the molecules of the liquid in a completely haphazard manner and the motion of the particles of a gas is similar to Brownian movement of the suspended particles gas रे मध्य से भलिया जो suspended particle जो भलिया मूव करथिले गोटे gas रे भी से भलिया मूव करिवे जोटा कोलोइडल सॉल्यूशन रे हमें देखुतिला। सो द लॉ ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यू कैन अप्लाई इट इन केस ऑफ योर ब्राउनियन मोशन। थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ए ब्राउनियन मोशन रो देथिले सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। अकॉर्डिंग टू हिम ब्राउनियन मोशन इज द बेस्ट एविडेंस ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ थर्मल मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ओके एटम आ मॉलिक्यूल माने थर्मली जेतेबेले आमे हीट दो से माने मूव करती ताकू प्रूव करने पाई बेस्ट तमर जो एक्सपेरिमेंट होची ब्राउनियन मोशन ओके इट इज द बेस्ट एविडेंस। ही एज्यूम दैट आइंस्टाइन एज्यूम दैट द पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए फ्लूइड फ्लूइड माने कौन द लिक्विड भी हो पारे गैस भी हो पारे ओके द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड फ्लूइड सो मे बी लिक्विड और गैस सो ताकू जदि आमे सस्पेंड कर रखुचु ए पार्टिकल गुडा को गोटे फ्लूइड रे देन it takes place in thermal motion of the molecules of the liquid okay and these particles are continuously struck on all sides okay continuously se mane sabu ade badei hebe by the molecules of the fluid and these particles as we have taken to be very small in size so maybe large in size as compared to the size of molecules but the particles are continuously hitting mane they badei hochandi struck they are struck by number of molecules on opposite sides okay hence they do not always exactly balance jota hame upare discussion kala hence each particle experience an unbalanced force and hence continuously driven about in random direction thus these particles behave as molecules of the fluid okay acha एबे आसीबा ब्राउनियन मोशन पाई आइंस्टाइन जो थ्योरीटा देले एक्चुअली यार दुईटा थ्योरी अच्छी गोटे है आइंस्टाइन थ्योरी जोटा एक्चुअली तुम पढ़ब आ गोटे अच्छी क्लासिकल थ्योरी जोटा कि कह जाए लेंजेविन थ्योरी ओके सेटा तुम भी एठी मु ऐड करिछि फॉर द सेक ऑफ नॉलेज लेंजेविन थ्योरी मध्य शेष रे तुम देखि परिबो यू कैन हैव योर सेल्फ स्टडी सो फॉर द टाइम बीइंग लेट अस सी दिस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन so according to Einstein theory of translational Brownian motion the particles in due course of time tend to diffuse into the medium on account of their random motion माने diffuse करिवे से medium रे आ ए जो diffusion हबो तारो गोटे diffusion coefficient अछि ताको हमें determine करि परिबा आइंस्टाइन कहले दुई प्रकार एटा हे परिबो नंबर 1 from the irregular random motion of suspended particles and number 2 from the difference in osmotic pressure between different parts due to differences in concentration of the suspended particles तो फर्स्ट पॉइंट को देखिबा calculation of coefficient माने जो diffusion coefficient of
random molecular motion. Okay, so for this, let the molecular concentration is not uniform mane non-uniform and having a gradient along x-axis. Okay, x-axis adaku yado gote gradient ଅଛି which is causing diffusion of the particles. Now let us say every particle is suffering a displacement small x in a time small t. Now as you can see in this figure, we have taken or considered a cylinder. Okay, this is a cylinder having its axis जोटा कि ये जो dotted line रे देखा जाउची, it is along x axis. Suppose capital A हिगला cross sectional area of the cylinder. एठी दुईटा end faces हमें देखुछु S1 ଆଉ S2 of the cylinder. Now एबे जदि हमें concentration molecular concentration नेगला N1 and N2 at the end faces S1 and S2 ताले suppose आमे कहूछु जे N1 is greater than N2 माने S1 end face रे बेसी concentration अछि as compared to S2 end face, then the number of particles which are crossing the surface S2 to the right in time t equal to half N1 x A. Okay, it should be noted that half of the particles which are contained in the cylinder will move towards right, अधा right आड़ को move करिवे, whereas आउ अधा left आड़ को move करिवे. Similarly एरा S2 पई हमें देखिला जो so right आड़ को जोटा move करथिला ता पई टाइम टा हमें बाहर कला. Similarly ए जो end face S2 रो left आड़ को जदी move करूची in time t, it is equal to केते ना again एटा half N2 x A. Okay, N1 टा चेंज होगला N2 को ताले एबे हमें excess number of particles बाहर करि परिबा which are crossing the middle layer to the right. So to the right माने जोटा right आड़ को जाउची ताको हमें positive नेबा, जोटा left आड़ को थिला देखो ऊपरे जोटा हमें left नहीं थिला ताको हमें negative नेबा, this one याको हमें negative नेबा याको हमें positive नेबा. Okay, and we will calculate the excess number of particles. So this minus this, यार value आसिला half N1 minus N2 into XA. अच्छा याको गोटे equation हमें देबा. Now let us say minus dn by dx ये हेगला तमरो gradient of molecular concentration. Okay, ए थ्रू हमें diffusion coefficient रो definition टा actually पाउछु. So the excess number of particles which are crossing the middle layer to the right जोटा हमें ऊपर calculate कला ताको हमें in terms of this diffusion coefficient लिखि परिबा minus capital D dn by dx into TA. Okay, so एबे compare करिबा equation 6.60 6.61. Okay, same जिंसो तणु करी हमें ए दुईटा equation रो एठी equate करि परिबा. Okay, so half n1 minus n2 x A is equal to minus d dn by dx TA. Okay, so n1 minus n2 रो value आसिला minus x dn by dx. Okay, and equation 6.62 ए जो equation टा this will become minus half x square a dn by dx equal to minus d ta dn by dx. एठी हमें जो n1 minus n2 रो value पाइछु x dn by dx minus, so ताको हमें एठी replace करिछु. ओके ई जगह रे. अच्छा तापरे कोन करिबा एठी देखो हमें calculate करिबा for the value of obviously diffusion coefficient capital D, it comes out to be it comes out to be x square by 2t. Okay, ये हला first method. तापरे second method ता देखिबा calculation of this diffusion coefficient from difference in osmotic pressure between different parts due to differences in concentration of the suspended particles. जो पार्टिकल माने सस्पेंड हेकी अछंती तांकर जो concentration रो डिफरेंस रहुची जदि हमें osmotic pressure रो डिफरेंस रहुछु ताहले मध्ये एई भलिया हमें diffusion coefficient को calculate करि परिबा. Okay, so let us go to the figure again, जो cylinder रो figure. Suppose हमें एठी osmotic pressure निगला P1 और P2 at the end faces S1 and S2. Okay, now जेमती हमें ऑलरेडी डिनोट करथिला स्मॉल n1 और n2 थिला
molecular concentration at the end faces S1 and S2 ताले gas law gas equation कहूची कोन P1 equal to N1 KT एटा केमती आसिला because N1 होची molecular concentration माने number of particles per unit volume so actually हेबा कथा relation कोन P1 V1 equal to N KT so এই V1 टा जाई कि RHS रे एठी N by V1 हेगला which is nothing but equal to small n1 okay now एठी K हेगला Boltzmann constant T हेगला temperature of the gas similarly P2 को हमें लिखि परिबा N2 KT ताले एबे pressure difference हमें बाहर करि परिबा P1 minus P2 which is N1 minus N2 KT now force as you know it is the pressure is the force per unit area so force difference by the cylinder due to this pressure difference याको हमें लिखि परिबा F equal to P1 minus P2 into A because force जेमति कहली pressure into area or pressure equal to force per area so F रो value आसिला केते N1 minus N2 KTA okay by using equation 6.66 जोटा हमें P1 minus P2 रो value पाइथिला ए जो force कोन करिवो this will push the cylinder in the positive x axis direction suppose आमे mean concentration of molecules नेगला small n ताले number of particles in the cylinder हेजिबे जोटा capital N ये हेजिबो simply small n into volume so ए cylinder पई volume केते हेबो ना capital AX A हेजिछि एठी cross sectional area then this force will act on the particles in the cylinder and the force which is acting on the particle याको हमें लिखि परिबा F by N okay so F by N यारो value हैला now एबे कोन करबा ए जो रेशियो F by N को हमें सपोज कहला स्मॉल f ताले एठी कैपिटल F आउ N रो वैल्यू हमें पाई जेचु जोटा ऊपरे ताको हमें पुट करिबा एंड विल solve it so that small f रो वैल्यू देखो एठी आछि minus kt by n dn by dx एठी हमें गोटे जिंस यूज करछु जो ए ब्रैकेट रे देखुछो n1 minus n2 by x याको this is nothing but the gradient which is minus dn by dx okay and here we assume that the particle is actually having a shape of a sphere okay particle को हमें sphere बढ़िया एठी assume करूछु and moving with a constant velocity v in a viscous medium तो viscous medium रे हमें जानिछु h for Stokes law एठी stroke लिखा है एटा Stokes हबो okay Stokes law कहूची कोन now this force will be equal to 6 pi eta rv eta हेगला coefficient of viscosity ताले एबे याको इक्वेट करबा ऊपर जो इक्वेशन पाइतला so 6 pi eta rv को इक्वेट कर देला so that nv रो वैल्यू आसिला this much okay and this equation is representing the number of particles which are moving towards the right per unit area ताले according to the definition of diffusion coefficient nv रो वैल्यू हमें पाउथला minus d dn by dx याको रिप्लेस कर देला ऊपर ए जगह रे so again we can calculate for the value of this diffusion coefficient capital D it comes out to be RT by N 1 by 6 pi eta r एठी जो capital R होची actually this is related to your Boltzmann constant like this k equal to R by N okay so এটা just like your gas constant तमे कहि पारो now एठी capital N हेगला actually Avogadro's number okay now from equation 6.63 जोटा हमें फाइनल वैल्यू पाउतला डिफ्यूजन कोएफिशिएंट रो फर्स्ट मेथड रे सेतिरु x स्क्वायर रो वैल्यू आस्तला 2dt एबे ई d रो वैल्यू जदी हमें पुट करबा x स्क्वायर रो वैल्यू आसीबो rt by n into t by 3 pi eta r okay एटा हेगला इक्वेशन 6.71 so both these equation 6.63 6.71 याको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई मध्य करा जाईची आउ ए इक्वेशन 6.70 जोटा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट रो वैल्यू याकू यूज करिकी हमें एवोगाड्रोस नंबर को भी कैलकुलेट करि परिबा ओके नाउ लेट अस सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ these Brownian particles in a vertical column so for this let us take Brownian particles in form of a gas in equilibrium under the action of Earth's gravitation
Now the concentration of particles in a vertical column, actually this concentration decreases with the height due to gravity. Okay, so height jete jete badhibo ei concentration komi jibo because of gravity. Now let us consider two layers of particles. Suppose they are having height h and h plus dh. Similarly, pressure जदि देखिबा आमे गोटे जगह अछि P आ गोटे जगह अछि P plus dP. Okay, and density याकू निगला में rho at a height h. Suppose आमे unit area गोटे layer रो consider करिबा, then the force due to gravity which is acting on the particles between the two layers, यार value हबो area जेहेतु आमे unit area नीचो 1 into dh into rho g or simply rho g dh. ताले net force on the layer केते हबो P plus dP minus P plus rho g dh. आउ इक्विलिब्रियम कंडीशन रे ए नेट फोर्स टा इक्वल टू 0 ही जिवो. ओके, सो एठी P आ माइनस P कैंसिल हो गला, सो दैट dP रो वैल्यू आसिला minus rho g dh. Now for the case of perfect gas or ideal gas, P is equal to small n kT. PV equal to nRT हुए जानिछु हमें. ओके, सेठी कैपिटल N था, एठी स्मॉल n होची तमरो molecular concentration. Okay, so dP रो वैल्यू kT dn, पुणी डेंसिटी रो रो वैल्यू mn, एठी स्मॉल n जेमति कहली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, स्मॉल m हे गला मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. ताले एई सब वैल्यू को एबे जदी सब्स्टिट्यूट करूछु, देन kT dn जोटा ऊपर हमें dP इक्वल टू माइनस rho g dh पाइथिला, सो kT dn इक्वल टू माइनस mn g dh और dn by n is this much. एबे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो अछि k याकू हमें कोन करिबा इक्वल टू r by n पुट करि परिबा. एठी n हे गला एवोगाड्रोस नंबर. ताले देखो एबे हमें रिप्लेस कर देला k रो वैल्यू. नाउ इंटीग्रेट करिबा बोथ साइड रे हमें. ओके, सो एठी dn by n रो इंटीग्रेशन log n आसिला. एठी कोन हबो, एठी dh केवल अछि वेरिएबल, सो एठी यार इंटीग्रेशन h हे गला प्लस with a constant. Okay, integration constant. Now suppose at a height h equal to h0, एटी molecular concentration हे गला suppose n equal to n0, then log n0 equal to एटी actually हमें k रो वैल्यू बाहर करछु, log n0 equal to this much और k is equal to this much. ओके, एई जो k रो वैल्यू हमें पाइला ताकू हमें एई इक्वेशन 3 रे पुट करिबा. ओके, सो log n is this one. ओके, ताले log n by n0 रो वैल्यू केते आसिला this one, और log को जदि हमें RHS को नहीं जिबा, it will become exponential. So from this n is coming out to be n0 exponential minus nmg by rt into h minus h0. Okay, now from this we can calculate the Avogadro's number. Okay, देखो इक्वेशन 4 रे हमें जो देखुछु log n by n0, सेठू हमें जदि कोन करिबा ए कैपिटल N रो वैल्यू जदि बाहर करिबा, then it is coming out to be like this, rt log n0 by n divided by mg h minus h0. Okay, now the effective mass of the suspended particle याकू जदि हमें लिखि देला small m equal to 4 by 3 pi a cube d1 minus d2. एटी small a हे गला radius of the particle, d1 हे गला density of the particle और d2 हे गला density of the intervening fluid. ताले ए small m रो वैल्यू जदि हमें ऊपर पकेइबा, Avogadro's number रो वैल्यू आसीबो like this. Okay, so now from this equation 7 the value of Avogadro's number can be calculated if we know the value of a and d1. Okay, so how can we determine these two? देखो फर्स्ट हला एठी डिटर्मिनेशन ऑफ d1. सो एठी पई कोन कले जने साइंटिस्ट पेरिन से यूज कले गुटे मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेंसिटी d1 with a specific gravity bottle. Okay, suppose m1 m2 हे गला masses of water and emulsion filling the specific gravity bottle. Okay, पानी आ गुटे emulsion को हमें specific gravity bottle रे फिल कर दीचो up to a volume v, and m3 हे गला mass of the particles which are left over
after the desiccation of the oven. Okay, then taking this d as the density of water. Okay, তাহলে volume of the granules কেতে ହେବ equal to m1 by d minus m2 minus m3 by d. তাহলে density of granules কেতে ହେଇଗଲା d1 is equal to simply এই ভলিউম को ଆମେ divide କରିଦେବା with the respective mass, so m3 divided by volume or d1 ର value ଆସିଲା this much. Similarly, we can determine the radius of the particles A by using the Stokes formula. So terminal velocity v ହେଇଗଲା particle ର, you can use this formula 6 pi eta av Stokes formula, which is equal to 4 by 3 pi a cube d1 minus d2 into g. So ଏଥିରୁ a ର value ଆସିଲା this much. Okay, so ଏଇ जो a ଆଉ d1 ର value ଆମେ ପାଇଲା ତାକୁ equation 7 ରେ ଆମେ put କରିକି we can calculate for the value of this Avogadro's number. Now to measure the value of n and n0 at heights h and h0 କ'ଣ କରାଯାଏ photograph ନିଆଯାଏ ଏଇ जो suspended particles ର. Okay, and the number of particles in these photographs जोटा आसिला ताको count कराଯାए. The value of this Avogadro's number is determined by Perrin and it was found to be जोटा से experimentally बाहर कले 6.82 into 10 to the power 26 moles per kg mole. Okay, so it is slightly higher than the present accepted value जोटा कि रहुची 6.023 into 10 to the power 26 molecules per kg mole. Okay, it है actually molecules. Okay, so जहाँ भी हो, so this is all about your Brownian motion and its significance. ता सहित एठी देखो मु जेमती कहितली स्टार्टिंग रे आ गुटे थ्योरी अछि लेंजेविन्स थ्योरी. एक्चुअली इट इज द क्लासिकल थ्योरी हला. सो एटा भी मु एठी रे ऐड करछि पीडीएफ रे. सो एटा मु तुमको टास्क देली फॉर योर सेल्फ स्टडी. थैंक यू.